Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO exam, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, as part of which in this session we are going to see industrial relations, workers' participation in management. Okay, now when it comes to this series, this is very important for all those who are preparing for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, given the fact that labor laws and industrial relations is one of the most important topic when it comes to UPSC EPFO exam, be it APFC और A और EO दोनों पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि out of 120 questions 15 plus questions are asked from these topics only. So you can understand the kind of high weightage that it has, मतलब good number of questions that it has. Now even if you know basics भी आप सही से अच्छे से रिवाइज कर लोगे, सही से आप पढ़ लोगे, तो यू विल बी एबल टू क्लियर 10 क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर पाओगे. सो विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वेटेज इट हैज़ गॉट. सो ऑल ओवर में अगर आप सही से इसको कर लेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर वेल. सो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस सेशंस रेगुलरली सो दैट आपका एक रिवीजन भी हो जाए एंड प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि जो भी कंटेंट हम इसमें करने वाले हैं ऑल दैट वी आर डूइंग इन द फॉर्म ऑफ MCQs ओनली. ठीक है. एंड दूसरा, मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द UPSC EPFO 2025 notification very soon, so this is going to help you in your exam preparation. So with this, let me start today's session. Moving on to the first question. सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल पीस. किस तरह से वो इंडस्ट्रियल हार्मनी को ज़्यादा करता है. बाय रिड्यूसिंग वेजेस एंड इंक्रीजिंग द वर्कलोड, नो, फिर तो वो होगा ही नहीं. बाय लिमिटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, नो, एक्चुअली इनफैक्ट इंक्रीजिंग द कम्युनिकेशन दैट विल हेल्प देम अ लॉट. बाय डिस्करेजिंग एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, नो, मैनेजमेंट में अगर वो पार्टिसिपेट करे तो ऑब्वियसली दे विल बी इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल, ये भी नहीं है. बाय गिविंग वर्कर्स स्टेक इन डिसीजन मेकिंग, फोस्टिंग ए सेंस ऑफ वैल्यू एंड रिस्पेक्ट, दिस विल लीड टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल पीस और harmony. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following is an example of direct participation as per the International Labour Organization? As per the International Labour Organization, there are two kinds of participation. एक तो direct है, एक तो indirect है. Now direct मतलब क्या है? Here the name itself suggests कि एम्प्लॉयज डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस या फिर प्रॉब्लम recognizing and then solutions as well. So here employees participate in team meetings to discuss production challenges and propose solutions. सब कुछ एक साथ ही डिस्कस करेंगे. So ये B is the correct answer. बाकी भी वो देख लेते हैं ऑप्शंस. A trade union negotiates wages on behalf of employees with the management, नहीं. A company's board of directors make strategic decisions without workers involvement, ये भी नहीं, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं. यहाँ पे इनडायरेक्टली हो रहा है, सो ये डायरेक्ट वाला नहीं है. द HR डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट्स न्यू पॉलिसीज विदाउट कंसल्टिंग एम्प्लॉयज, ये भी नहीं है. सो हियर B इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. Which of the following scenarios best represents indirect or representative participation as per the International Labour Organization? So simple, indirect या फिर representative participation. So they are selecting someone to represent their issues and discuss with the management. So simpler term जो union type का होता है, that will come into place here. So एक बार options देख लेते हैं. A group of employees votes to elect representatives who will negotiate workplace policies with the management. Very much true है. The management unilaterally decides without, नहीं. A company conducts an employee survey, so directly उनसे feedback ले रहा है, ये भी नहीं. इंडिविजुअल वर्कर्स डायरेक्टली सजेस्ट, अगेन डायरेक्ट वाला जो पहले क्वेश्चन में, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, उसमें ये आता है. सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर. Which of the following best illustrates financial participation as per the International Labour Organization? Now when we look at it, financial participation, so company के जो profits है उनका किस तरह से इनको मिल रहा है and all that, and here
जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. रिटेल फर्म प्रोवाइड्स एनुअल बोनसेस बेस्ड ऑन कंपनीज प्रॉफिट्स एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस. सो हियर दे आर मेकिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेट फाइनेंशियली. सो हियर जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करे. सो दिस इज वेरी मच ट्रू इन दिस केस. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउस एम्प्लॉयज टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर वर्क प्लेस नेगोशिएशंस. नो, बिकॉज फाइनेंशियली कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है. अ कंपनी ऑर्गेनाइजेस रेगुलर मीटिंग्स वेयर एम्प्लॉयज कैन सजेस्ट, ये भी नहीं है. अ हेल्थ केयर कंपनी कंडक्ट्स, ये भी नहीं है. सो हियर दिस ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. So coming to the next question. As per Amartya Sen's classification of workers' participation, which of the following best describes real participation? Now when we look at the classification of workers' participation as given by Amartya Sen, ये तीन तरह का है. Okay? एक तो है superficial participation, दूसरा है इंटरमीडिएट पार्टिसिपेशन, तीसरा है रियल पार्टिसिपेशन. सुपरफिशियल पार्टिसिपेशन में क्या है, वो कहीं पे भी डायरेक्टली नहीं करेंगे, जैसे कि कोई सर्वे टाइप का है. ओके, एंड एनोनिमस एक बॉक्स सिस्टम टाइप का है. आपको जो भी सजेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो बोलेंगे कि उस बॉक्स सिस्टम में आप उसमें डाल दीजिए. देयर बाय दैट विल गेट टू द मैनेजमेंट, दे लुक इनटू दैट एंड सी व्हाट दे कैन डू ऑन दैट. ओके, ये हो गया हमारा सुपरफिशियल, बिल्कुल ज़्यादा कुछ ना के बराबर कह सकते हो, क्योंकि देर इज नथिंग, नो से ऑफ द एम्प्लॉय इन दिस. सेकेंड आता है इंटरमीडिएट. नाउ इंटरमीडिएट में क्या है, रादर देन दे गेटिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व, वो किसी के थ्रू करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू यूनियंस एक्सेट्रा. सो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, डायरेक्टली नहीं, बस ये सब उस यूनियन के मेंबर्स को बोलते हैं, दे विल गो एंड नेगोशिएट विद द मैनेजमेंट. तो ये इंटरमीडिएट हो गया. तीसरा आता है रियल पार्टिसिपेशन. एक्चुअली हियर एम्प्लॉयज एक्टिवली फॉर्म पार्ट ऑफ वेरियस टीम्स, कमिटीज एक्सेट्रा, and they'll participate in some unrestricted consultations and thereby जो भी decisions लेना है उन सब में वो participate करते हैं. So here with all these options, C, that is employees are actively involved in unrestricted consultations and co-determination on both strategic and operational decisions within the enterprise. ये सही है. एक बार बाकी options भी देख लेते हैं. Employees are allowed to submit anonymous suggestions. ये actually superficial participation में आता है. Workers engage in collective bargaining. ये आता है intermediate वाले में. Workers are informed about company policies and changes but do not have any direct influence. ये एक्चुअली सुपरफिशियल टाइप का ही समझ सकते हैं. एक्चुअली इसमें कुछ भी, देयर इज नो जीरो से एक्चुअली ऑफ द एम्प्लॉयज. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. Which of the following statements best describes a quality circle? Now quality circle क्या है? Actually it is a participative management technique जहाँ पे small teams generally of 6 to 12 members वो सब मिल के आते हैं. These are again voluntary, okay, and then they'll come together and जो भी उनके problems है, all that they'll discuss and accordingly arrive at the solution for those problems. ये पहले सबसे पहले जापान में आया था. ओके, नाउ हियर ऑफ ऑल दैट मैंडेटरी कमिटी, नो मैंडेटरी नहीं है. ट्रेड यूनियन लेड ग्रुप दैट नेगोशिएट्स, नो, एक्चुअली वॉलेंट्री ग्रुप है जो दे कम टुगेदर. ओके, ए गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी, ये भी नहीं है. A participative management technique where small team of employees voluntarily identify and solve quality and performance related issues, ये true है. So here in this case B is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following statements about stock ownership as a method of worker participation is correct? Stock ownership allows workers to become shareholders, increasing their control over the industry. Yes, this is very much true. यही है. Employee stock options plan was first introduced in India by TCS. ये TCS ने नहीं, Infosys ने किया था. ठीक है. एंड सबसे पहले वर्ल्ड में ESOPs वाला प्लान जो आया था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान, ये यूएस में हुआ था. ठीक है. पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन इंडिया आर नॉट अलाउड टू इम्प्लीमेंट ESOPs, ऐसा कुछ भी नहीं है. सबसे पहले इन्फोसिस ने लॉन्च किया, उसके बाद सबसे पहले PSU जो ESOPs का प्लान लॉन्च किया था वो है NALCO, दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड. सो ये यहाँ पे इट फर्स्ट पायनियर्ड इन US, नो डाउट, ओके, बट दिस इज ऑफ इंडियन PSU which has launched for the first time. So here A is the correct answer of all the options. So here we are looking at the levels of workers' participation in management. At which level of workers' participation in management do employees engage in decision making through bodies like industrial committees and wage boards? So if you look at the level, सबसे पहले international level,
ऊपर से नीचे आते हैं. तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेज या सेमिनार्स जो कंडक्ट करके डिस्कस करते हैं, लाइक योर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. उसके बाद आता है नेशनल लेवल. नेशनल लेवल पे जो ट्राइपार्टाइट बॉडीज होते हैं एंड ऑल दैट विल कम इनटू पिक्चर. ओके, उसके बाद आता है रीजनल लेवल. नाउ हियर स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड्स एक्सेट्रा, दैट रीजनल लेवल पे जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन होता है वो आते हैं. उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल लेवल. इंडस्ट्रियल लेवल पे आते हैं कई सारे डिफरेंट तरह के इंडस्ट्रियल कमिटीज, वेज बोर्ड्स एक्सेट्रा. उसके बाद आता है यूनिट और एंटरप्राइज लेवल. यहाँ पे जो कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए जो यूनियंस होते हैं और वर्क्स कमिटीज एक्सेट्रा, दे आर मेड सो दैट वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कैन हैपन. ओके, ये डिफरेंट लेवल्स. तो इसमें जो इंडस्ट्रियल कमिटीज एंड वेज बोर्ड्स है, दैट विल फॉल अंडर द इंडस्ट्री लेवल workers participation in management. So here C is the correct answer. Moving on to our next question, which constitutional amendment led to the introduction of Article 43A emphasizing the workers participation in management through mechanisms like shop councils, joint councils etc. से 1975 में पहली बार गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया था रिलेटेड टू शॉप काउंसिल्स एंड जॉइंट काउंसिल्स. Majorly this would be applicable to all those enterprises, manufacturing and mining where employing 500 or more people, okay, in the public, private, cooperative sector, irrespective of the joint consultative machineries. So इससे क्या होगा, no, based on these shop councils and joint councils, the labor, the employees, the workers, they can participate in the management by organizing these councils, shop councils, joint councils, जैसे works committee etc. ठीक है. now ये आया है, so that now this has to be introduced into the constitution. तो उसकी वजह से, वो स्कीम की वजह से, in the same year article 43A was amended and this was introduced, which was form of the directive state principles जो होते directive principles of state policy, उसमें उन्होंने amendment किया so that there is legal mechanism for shop councils and joint councils to be established in various establishments so that workers participation in management can be done. So ये हुआ था वन सेकेंड, ये हुआ था हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 में. 1975 में वो सब डिस्कशंस वो सब होने के बाद 1976 में ये हुआ था. सो हियर A is the correct answer. Moving on to our next question, what is the primary function of a shop council in an industrial unit? जो shop floor area होता है या फिर जहाँ पे major work जो होता है, there in with that workers etc, this has to be constituted. And when we talk about shop councils, majorly they assist the management in achieving the production targets and improving the efficiency. तो इसमें जो चेयरमैन होता है वो मैनेजमेंट करती है, मतलब डिप्लॉय करती है. एंड जो वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इस शॉप काउंसिल को, वो एम्प्लॉयज वर्कर्स की तरफ से आते हैं. एंड एटलीस्ट 2 years इसको वर्क करना पड़ेगा. एंड मंथली वंस डेफिनेटली दे हैव टू मीट फॉर डिस्कसिंग ऑन वेरियस इश्यूज. एंड इसमें जो बाकी मेंबर्स होते हैं, इट हैज़ टू बी equal representation from the management and the workers. Okay, so here in this case B is the correct answer. Moving on to our next question, what is the key function of a joint council at the plant level? Yes, plant level पे, floor level पे हमने देखा है कि shop council है. Now when we look at the plant level, थोड़ा सा higher, वहाँ पे joint councils होते हैं. and ये joint councils में again chairman को management decide करती है, nominate करती है, and vice chairman को वर्कर्स मेंबर्स डिसाइड करते हैं. एंड इनको एटलीस्ट 3 months में एक बार मिलना पड़ेगा. एंड मेजरली दे विल बी फोकसिंग ऑन द डिस्कशंस एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन एफिशिएंसी, सेफ्टी मेजर्स, वर्किंग कंडीशंस, जो भी इश्यूज है वो सब वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे. सो दैट अगेन ऑल दिस to improve or to increase the workers participation in management, thereby leading to industrial peace. So here C is the correct answer. So moving on to our next question, as per section 3(2) of the Industrial Disputes Act 1947, what is the primary objective of a works committee? Now section 3(1) बोलता है of the Industrial Disputes Act, it provides for the setting up of the works committee. जहाँ पे भी 100 से ज़्यादा
वर्कमैन है वहाँ पे वर्क्स कमेटी होना ज़रूरी है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे भी वर्क्स कमेटी होगा उसमें मैक्सिमम 20 मेंबर्स होना चाहिए, एंड इन दैट देर शुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द वर्कमैन. And section 3(2) of the Industrial Disputes Act 1947 says this is to secure and preserve amity and good relations between the employer and the workman. Negotiation नहीं, to enforce labor laws नहीं, to represent workers in legal disputes against, ये भी नहीं है. This is the right answer. B is the right answer here. What is the primary role of a worker director in an enterprise? जहाँ पे भी वर्कर डायरेक्ट है, मेजरली उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर प्राइमरी रोल ये होता है टू रिप्रेजेंट द वर्कर्स इंटरेस्ट एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट. दिस इज द प्राइमरी रोल ऑफ द वर्कर डायरेक्टर ऑफ एनी एंटरप्राइज. Moving on to our next question, what is the primary objective of the joint consultative machinery established in 1966? Now joint consultative machinery, as it has been given in the question, 1966 में ही establish हुआ था by the government on the basis of recommendations of the second pay commission which was constituted in 1959. अब इनको कहाँ से मिला था ये, मतलब कहीं से तो देखा था, ये यूके में विटली काउंसिल्स करके होते हैं जहाँ पे टैक्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर कंस्ट्रक्ट dialogues between the workers and the management उन्होंने किया था. on the same lines joint consultative machinery भी इंडिया में लॉन्च किया गया था. now this is non statutory and mutually agreed upon between the management and employees. they have come up with this. ये 3 tier का होता है, ऑफिस लेवल, डिपार्टमेंट लेवल, नेशनल लेवल. एंड जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरीज जनरली ये 1 in 4 months मीट करते रहते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे कीप ऑन डिस्कसिंग और यू नो दे पेव द वे for discussion between the workers and the management so that dispute resolution हो जाए. so here in all these options C is the correct answer. okay, how often are joint council, जो अभी हमने shop councils, joint councils देखा था, how often they are required to hold meetings, ये उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था. and here they meet every 3 months, quarterly they have to meet and discuss. okay, so here B is the correct answer. so I hope you really like this session. Before winding up, a small announcement. EduTap is currently offering various courses, especially for all those who are preparing for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, be it APFC or EO or EVO. तो इसमें 3 तरह के courses majorly they have launched. one है मास्टर कोर्स जो 1 point सोर्स होगा आपके लिए, हर
सब्जेक्ट, हर कंटेंट के लिए, इन द फॉर्म ऑफ PDF, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस, एवरीथिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट एवरी थर्सडे कुलदीप सर एक स्ट्रैटेजी सेशन लेंगे to guide you on how to utilize that enormous content that has been provided as part of this course. along with that जो भी आपके क्वेरीज है वो सब रिजॉल्व करेंगे. दूसरा है दूसरा है टेस्ट सीरीज प्लस है. ये उन बच्चों के लिए है जो मेजरली दे आर लुकिंग आउट फॉर एक सिंगल सब्जेक्ट एंड कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए हमें, बाकी सब्जेक्ट्स हम पढ़ लेंगे, उस तरह के बच्चों के लिए है ये. ओके. एंड तीसरा है टेस्ट सीरीज, मतलब ये ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम दिया होगा या फिर कंप्लीटली अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट दे नीड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रिपरेशन, और रियल एग्जाम फेल होने के लिए कुछ मॉक टेस्ट टाइप का. फॉर दैट दे कैन गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज. सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम मेंबर्स. बाकी सब डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. Okay, and with this I'm winding up this session. Thank you very much for being with me so patiently. Thanks a lot and all the best. See you all in the next session very soon. Thank you.